stalwart and man of the hour. Rao Inderjit Singh is with the Tribune today in the powerhouse of Ahirwal, the Rampura House. Inderjit ji, first and foremost, the biggest question: are you running for the CM? क्या आप CM की रेस में हैं? I am not individually in the race for the CM, but if it is offered to anybody, I don't know anybody who would refuse. And it's been a dream of the southern Haryana electorate that after my father in 1967-68, even though this area has supported both the Congress and helped them form a government, has supported the BJP and helped them to a large extent in forming the government twice over. They feel that the tallest leader that they have elected for so many years, he has not been adequately rewarded for their efforts. So this is a dream that people harbor, but it is the party's decision as to who would become the chief minister once the party gets into the majority. So when you switched over to BJP in 2014, I think your supporters, the area, the region, Ahirwal, you are waiting for the चौधर. Ahirwal ने तब से शायद उस चौधर का इंतजार किया है, तब से लोगों का सपना है. आपको लगता है कि आपको सीएम के लिए ना कंसिडर करना आपका आरएसएस या वो कोर बीजेपी ग्रुप का पार्ट ना होना भी एक कारण है? हाँ, ये तो दुरुस्त है. मैं जब बीजेपी के अंदर गया था, उस टाइम हरियाणा के अंदर शायद 2 बीजेपी के एमपी एमएलए हुआ करते थे, और उसके बाद 14 के अंदर नरेंद्र भाई मोदी को मेरे को भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज्वाइन करने के उपरांत उनको डिक्लेयर कर दिया कि नरेंद्र भाई मोदी इस बार हमारे प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होंगे. तो वो प्रधानमंत्री भी बन गए, और उसके उपरांत फिर जो हरियाणा के अंदर इलेक्शन हुआ तो एक तो उनका प्रभाव हुआ, फिर इतने टॉल लीडर सारे हरियाणा के अंदर ही नहीं सारे देश के अंदर एक्सेप्टेबल हैं, तो हरियाणा के अंदर भी सकारात्मक प्रभाव हुआ, और हरियाणा के अंदर भी पहली मरतबा 47 सीट से मेजॉरिटी बीजेपी हासिल की. But it's been 10 years. लेकिन I mean, we commonly hear this. Still, they have not given you what your stature deserved or deserves. And in this time, everybody was expecting a big berth in Modi cabinet for you, but they retained you as Minister of State, despite being the fact of you the most senior most parliamentarian from our state, and former CM and only one-time MP, Mr. Khattar, he managed to be inducted as the power minister and got housing and all. So, I mean, what do you think? Has Modi government valued you enough? See, there was this outsider tag that has been attached to me for the past 10 years. Have you shunned it now? I am not so sure that I have really been accepted by the lower hierarchy. Okay. But I have been accepted by the higher hierarchy to a large extent. I feel that they have now accepted me after 10 years. And that's why they have taken suggestions from me in the distribution of the tickets in the Vidhan Sabha in 2024. So I think there is this resentment at some level within the lower hierarchy in Haryana itself, okay, which said that how did Inderjit Singh join the party? But you mentioned the tickets. So this year, I think the ticket selection has really put the spotlight on you. When we had the selection committee meeting happening in Haryana, I think you didn't recommend any name. You didn't even veto or second name of your own daughter. But when things went at the central level, it was all about Rao Inderjit Singh. Rao Inderjit Singh taking stand and everything. And now in Haryana, 12 seats for sure, and 20 they say that you are the one who has got his supported candidates there, and now you are in the driver's seat for those seats. So how did that magic happen? See, unless somebody wants to accommodate you, there's no point begging. You can't beg and ask for a seat and you won't get it, at least not in this party. So when the decisions were being taken or names were being suggested, I didn't suggest any name, not even my daughters. They asked me for my preference for a couple of seats where they thought my daughter wished to stand from. I said, no, it is for you to decide. So you thought the state hierarchy will vote here? No, there was somebody from the center as well. Okay. But I said,
if I ask, it's not necessary that I will be given. So why हमें दो बार तो हमारे को मान करके और फिर भी मतलब हमारे को निराश करना पड़ा, इसको मानते ही नहीं। देखते पार्टी क्या करती है, अगर हमने काम किया तो पार्टी दे देगी, नहीं काम किया तो पार्टी नहीं देगी। तो उसके बाद भाईरा की हमने सलाह मशवरा जब किया तो उस समय उन्होंने खुद ही कहा कि पार्टी चाहती है कि इस बार आपकी इलेक्शन लगे। इस तौर पे हमारे को टिकट उन्होंने मेरी बेटी को दिया। और इसके अलावा सौभाग्य ये है कि पार्टी ने बड़ा फूक करके इस बार टिकटों का वितरण किया। सर्वे एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5-6 बार सर्वे की और सर्वे के बाद उन्होंने फिर सलाह मशवरा किया। सौभाग्य ये रहा कि जिन लोगों के ऊपर सर्वे के अंदर सबसे अव्वल नाम आया था वो मेरे समर्थक थे, या यूँ समझिए आप कि वो मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज्वाइन किए थे। इसलिए कहते हैं कि इंद्रजीत सिंह ने अपने समर्थकों को टिकट दिया। आप कह रहे हैं फूक के पार्टी ने टिकट दिया, तो आपको नहीं लगता फूक के पार्टी ने घर फूक लिया? इतना ज्यादा फैक्शनलिज्म, people are crying, people are joining other parties and everything. The ticket distribution, in fact, has actually brought what was hidden till now in open. It's Rao Inderjit camp versus the Khattar camp. तो आपको लगता है कि पार्टी में भी ये दो I don't know whether it is my camp versus Khattar's camp or anybody else, but for the last 10 years, Mr. Khattar has been the Chief Minister of Haryana, and he had his close people, even those that were in his office as PAs or as OSDs. They started aspiring for tickets. 3-4 of them were there, openly saying that I'm going to stand from here, there, and the other. So you cannot run a party by giving tickets to PAs. So I obviously would have objected to that. And I said those that have worked in the field should be given preference. And you take a survey out. Now, what does the survey say? The survey says if X is entrenched within the party, give him a ticket. If there is anti-incumbency against Y, you deny him the ticket. So all those people who are making Mr. Khattar as their beneficiary, they finally found that in the surveys they were nowhere. And they were only dependent on, say, not Khattar, I'm saying, on a particular leader within the hierarchy. They thought that they will get a ticket on just his recommendations alone. But like I said, the party decided to take a survey. And in the survey they were nowhere in the street. So now when they were disappointed after having sort of had these ambitions, we obviously are going to sort of fret about a little bit. But it's a question of about 3 or 4 days, and I think things settle down. Things will settle down. Okay. So now you say that it has been done according to the surveys. So BJP will win in Ahirwal. BJP could possibly even win in Haryana. In Ahirwal, it's definitely going to win. It's definitely going. So you in the driving seat are going to ensure. But to the best of my ability, I will try and ensure that all those people who have been given tickets in my sphere of influence, they go through as Congress. Ahirwal has been a Congress stronghold for decades, generations. They switched their faith, I would say, in BJP along with you. They trusted you. They started choosing BJP after 2014. Even if we see the records of charts, that's the time when BJP actually made a mark in the area. But on ground, Ahirwal is not satisfied today. There is a strong anti-incumbency. They say a lot of things have not been done over the 10 years. So, do you think they'll be able to trust BJP again? Let me just go back a little. It's not been always a Congress stronghold. If you remember, way back in 77, 78, that's way back. Yeah, that was the first time when I joined the Congress. So the Congress only had 2 MLAs, and my father's party, which was called the Vishal Haryana Party, had 6 MLAs, 6 or 7 MLAs. And Indira ji had been sent to jail. So after she was released, she came over to our house, and she said that I need some help from my brothers. Even though we had fought against the Congress,
I need help from my brother. That's the famous folklore. Indra in her slippers. She Your came, father. That's the came, most viral picture I must say this election. she came for help, and since she was our guest, we couldn't refuse her. At least my father couldn't refuse her. And she asked that my father's party be incorporated into the Congress party. So that's how Ahirwal became Congress stronghold. And it remained so for 35 years. Then thereafter, when I left the Congress for various sins of omission and commission, there was a bit of a change in the attitude vis-a-vis the Congress, and the whole sentiment came along to the BJP and Mr. Modi. So the first time around, the BJP made us, I think it was 47 seats in 2014. Since 2014, they have consistently been with the BJP. And there is, of course, this resentment. I mean, that is palpable. I mean, people have felt it, people who are in the media have felt it, whether it's visual or whether it's print media, they felt it that वास्तव के अंदर जितना हमने योगदान दिया है पार्टी को, उतना हमारे को महत्व जितना मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। ये वास्तविकता है, और कोई इसको डिनाई करता है तो वो अपने आप को बर्बाद है। वास्तविकता है। नाराज है कि हमारे को मतलब पर्याप्त तौर के ऊपर आकर नहीं है। तो फिर वो भरोसा कैसे करें दोबारा? भरोसा तो यही है कि उम्मीद पे दुनिया जिंदा है। तो अब आज के दिन वो देखते हैं कि इंद्रजीत सिंह की थोड़ी सी चलने लगी है और हर जगह पे उसकी चौक नहीं हो रही है, तो शायद वो इस बार बीजेपी के लिए भरोसा है। तो मतलब इंद्रजीत जी गारंटी दे रहे हैं? इंद्रजीत जी अपनी तरफ से तो मैं प्रयास करूंगा। हाँ, बट आगे का आपने जैसे भी ये वाकया बताया कि इंदिरा जी आपके यहाँ पे गेस्ट आई थी और आपके फादर ने सपोर्ट किया, तो बहुत सारी बातें चलती हैं। देयर आर रिपोर्ट्स दैट कांग्रेस इज ट्राइंग टू गेट इंद्रजीत जी। तो कल को कांग्रेस अगर रामपुरा हाउस में दोबारा गेस्ट आ जाए तो क्या इंद्रजीत जी जाएंगे? देखो वो जमाना ही दूसरा था, और जब से मैं कांग्रेस छोड़ा तो मेरे पुराने साथी कांग्रेस की बड़े बड़े पदों के ऊपर भी आज के दिन है। जब तक मैं कांग्रेस में था तो जब तक तो मैं घर की मुर्गी दाल बराबर था, तो कोई महत्व मेरा था नहीं। जब मैंने कांग्रेस छोड़ी उसके बाद वो बीजेपी जब सत्तासीन हुई तो मैंने सोचा कि ये तो घर की मुर्गी हमने दे दी, सोने की मुर्गी थी। तो ये उसके बाद मेरे साथ कांग्रेस तो रहता ही सभी का, बातचीत भी होती रहती है अनेक पार्टियों की, लेकिन फैसला कि मैं किस पार्टी में रहूंगा या किस पार्टी में नहीं रहूंगा वो तो मेरे पे निर्भर है। तो मैंने बीजेपी के अंदर रहना मंजूर किया है और बीजेपी आज के दिन काम अहिरवाल के मेजर प्रॉब्लम्स में या मेजर शिकायतों में दो हैं, एक अहिर रेजिमेंट का अधूरा वादा, एक अग्निवीर। अहिरवाल इज प्रोबेबली लैंड ऑफ वॉरियर्स। रेवाड़ी जैसे डिस्ट्रिक्ट में या वहां पे फौज सपना है लोगों का, हर दूसरे घर से, और शहादत बहुत ही है। सो जो ये गुस्सा है अग्निवीर को लेके, और अहिर रेजिमेंट अभी तक नहीं बन पाया है, आप भी 10 साल से चिट्ठियां लिख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या है बीजेपी का अब स्टैंड? इस इलेक्शन में क्या कहती है बीजेपी की अग्निवीर और अहिरवाल पे क्या अहिर रेजिमेंट? तो समय से पहले भाग से ज्यादा किसी को अपना मकसद पूरे करने में टाइम नहीं मिलता नहीं। जहाँ तक अहिर रेजिमेंट की बात है, ये बात दुरुस्त है कि आज़ादी के बाद सरकार ने ये फैसला किया कि अब हम किसी जात के नाम के ऊपर कोई नई रेजिमेंट नहीं बनाएंगे, और वही बाकायदा आंसर स्टैंडर्ड मेरे को मिलता है, चाहे मैं जुबानी बात करता था या चिट्ठियों के जवाब के अंदर मेरे को उत्तर देते थे। तो ये कि हम उस बात के ऊपर अहिर रेजिमेंट को नहीं बना सकते, क्योंकि हमारा निर्णय है कि जात के ऊपर हम नहीं बनाएंगे। लेकिन जो आज़ादी से पहले हैदराबाद स्टेट हुआ उसके अंदर 2 टुकड़ियां थी जो कुल निखालिस हीरों की हुआ करती थी, और वो बाद के अंदर कुमाऊं रेजिमेंट के अंदर शामिल हुई। तो उस चीज को हमने एडिक्वेटली एक्सप्लोर नहीं किया है। तो अगर आप ये कहते हैं भारत सरकार के लोग कि भाई हम नए रेजिमेंट नहीं बनाएंगे, तो
तो ये तो पुरानी है रेजोल्यूशन, उसी के नाते के ऊपर हम इसको थोड़ा सा आगे सरकाने की कोशिश करेंगे इस इलेक्शन के बाद। मतलब हम अहिरवाल रेजिमेंट मांगेंगे रीजन पे, रेजिमेंट ना मांगे तो कम से कम बटालियन हो जाए, हाँ, तो उसके ऊपर तौर भी कर दें, किसी रेजिमेंट के अंदर जो बटालियन हो जाए जिसके ऊपर अहीर लिखा जाए, उससे भी मेरे ख्याल से काम चल जाएगा। तो अगर पहला कदम चला गया तो उसके बाद दूसरा कदम हो सकता है कि आगे हमारे को चलने का मौका मिल जाए। ये मैं सोच रहा हूँ, इसके अंदर भारत सरकार क्या निर्णय लेगी वो बात अलग है। दूसरा आपने अग्निवीर का कहा, ये अग्निवीर का मकसद क्या है ये हमारे को समझाते हैं कि यंगर जनरेशन, हमारी जो फाइटिंग फोर्स है, its age should be brought down. Right now it's becoming trending to be a little over 30 years. So we want to bring it down. But maybe this was not the correct way to do it. And all these people who train for ever and ever, just so that they can get into the army, navy or air force, because it's a tradition in their family. And I must tell you, my district, Rewari, has the highest percentage of ex-servicemen in the whole of Haryana. I don't know about Uttarakhand or Himachal Pradesh, but in Haryana we have the maximum number of ex-servicemen per capita. So people do want to get back into the forces, and it has been a dampener on their spirits कि उनको सिर्फ 4-5 साल के लिए वहाँ को लगाएंगे और उसके बाद घर भेज देंगे, फिर वो ना घर के रहेंगे और ना घाट के रहेंगे। So you've been following it up with the central government, the demand of the people for that. तो अभी तक उसमें कुछ? अभी तक नहीं, वो उसमें कुछ हमारे को अखबार में पढ़ने को मिला है कि there's a bit of rethinking on this issue. हाँ, so जो 5 साल के लिए सभी को लेकर के वापस भेज दिया करते थे, तो कुछ परसेंटेज उनमें से 5 साल की जगह ज्यादा अरसे तक फौज के अंदर रखने की बात है। और शायद हम ये उम्मीद करते हैं कि इतने दिन तक रखेंगे जब तक उनको पेंशन 20 साल होता है पेंशन, तो पेंशन मिलने लायक जब तक ना हो जाए जब तक वो करनी चाहिए। तो जो अच्छे हैं, तगड़े हैं, फिट हैं, उनको 5 साल से फालतू रखेंगे, और शायद जो इतने अच्छे नहीं है वो पाए, जो ढल नहीं पाए फौजी के तौर के ऊपर, उनको 5 साल के बाद वापस भेज देंगे। ये दिस इज ओनली ऑन दी एंगल, इसके अंदर विचार हो रहा है, होगा क्या मुझे अभी तक नहीं। हम अहिरवाल से अगर आगे बात करें, आपकी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी गुड़गांव में, गुड़गांव इज अ मेस, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट, एंड वी हैव सैनिटेशन क्राइसिस, द सिटी इज ड्राउनिंग, वी हैव द मलबा lying everywhere, CND waste is everywhere, the city is collapsing, the millennium city is collapsing. What do you have to say about it? I can't help but agree with you. Gurgaon produces the most amount of revenue in the state. 65% of the revenue that goes into the Haryana treasury is Gurgaon based alone. If you add Faridabad, then it becomes a lot more. And this revenue has been used by the people in power to make development all over Haryana. But you can't kill the golden goose. The trouble is that they have killed the golden goose, or in the process of killing the golden goose, that lays the golden egg. Gurgaon was a municipality. When I first became an MP from Gurgaon, it was a municipality. I got it made during the communist regime into a corporation. From the corporation, I got it into a Gurgaon Metropolitan Development Authority. So all these things have been my initiatives. My basic idea was that whatever money we garner from Gurgaon, in whichever way, whether it's taxes or whether it's industries or whatever, it should at least be used to develop Gurgaon itself. So the budget of Gurgaon, even though it has been thousands of crores, even for 1 crore of rupees, if there is to be a filling of a pothole in a particular 10-kilometer road, the pile goes to Chandigarh. Yeah. The Gurgaon Metropolitan Authority or the Development Corporation, they don't have the financial powers to take a decision at home. So it goes to Chandigarh. Mr. Khattar was even the chairman of the Gurgaon Grievances Council for 2 years. Yes. And I kept repeating this, that please ensure that these people who have been elected should have financial autonomy.
The councillors? The councillors, the mayor, they should have financial autonomy. And it has been my demand, which somehow never sort of materialized, that in states like Rajasthan, in states like UP, the 74th and the 75th Amendment are enforced. Which means that if you are Zilla Parishad ka chairman, then you will be writing ACRs for those who serve under you. If you are a mayor, you will be writing ACRs of all the officers who are under you. Here what is happening is that the mayor has to go and sit like a beggar outside the office of the CEO, outside the office of the ADC, if he is Zilla Parishad ka chairman, or even the BDO, if he is a municipal, if he is the block chairman. So these are things that are detrimental to the self-respect of those that have been elected. My next step, once we get back into the saddle in Haryana, is going to be that I'm going to push for this 73rd and 74th Amendment to be incorporated for Haryana as well. मतलब उससे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे, काउंसलर्स होंगे, मेयर्स होंगे, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे। वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, उनके हाथ के अंदर कलम हो। कलम होगा, तो अफसरों के हाथ नहीं जोड़ने। अफसरों के हाथ में कलम नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है कि गुड़गांव को जो इतनी बदहाली हुई है, उसका मेन कारण क्या? उसका मेन कारण ये है कि ठंडे बस्ती में फाइल चली जाती थी। यहाँ से वो रिकमेंड करते थे और फिर कहते थे कि 2 करोड़ रुपया का से ऊपर का ये मतलब उसका खर्चा 2 करोड़ से ऊपर का आएगा तो चंडीगढ़ जाएगी फाइल। वहां जाके ठंडे बस्ती में हो जाती थी। 2 करोड़ के नीचे का था तो सीईओ फैसला कर देगा। इस बीच में जो मेयर है या जो काउंसिलर्स हैं, उनके पास ना 2 करोड़ के ऊपर वाला कुछ मिलता था, ना 2 करोड़ के नीचे वाला कुछ मिलता था, तो वो तो ठंडे बैठे हुए रहते थे। सरकार का क्या रोल रहा? लोगों ने सीएम पे डाला, लोगों ने ट्विटर पे डाला, लोग अब भी डाल रहे हैं, गड्ढों की फोटो डालते हैं, कूड़े की फोटो डालते हैं 2 साल से। ग्रीवेंसेस तो लोगों के एड्रेस ही नहीं हुए। सरकार का क्या रोल? सरकार का ये रोल रहा है कि if they had given the autonomy, financial autonomy to the corporation, then they would not be blaming the government. They would be blaming the cooperators. They would be blaming the Zilla Parishad chairman. What's happening now, because everything was being centralized and sent to Chandigarh, they're blaming the government and they're suffering because of that. The parties in the party is suffering because of that. It is going to suffer. Yeah. In Gurgaon, other things also which came about, which was sort of now redeemed to a certain extent, but like the identity of property and things. आपने बड़ा फेमस एक आपका वीडियो हुआ था। आपने कहा था मैं खुद धरने पे बैठ जाऊंगा अगर ये दिसंबर तक साफ किया। हाँ, वो तो बंदवाड़ी की बात थी। जो कचरा जो उठाते थे, एक तो कचरा उठ लिया था गुड़गांव से और लोग धरने पे जाने वाले थे। तो मैंने कहा कि अगर हम धरने पे बैठ जाएंगे तो मतलब हमारे ही आदमी बैठेंगे ना, हमारे जो सपोर्टर थे वो बैठेंगे, तो उनको आई डोंट वांट देम टू सिट ऑन धरना एंड आई वांटेड दैट अटेंशन टू बी पेड टू दिस। सो आई सेड बाय व्हेन दे डिसाइडेड, द सीईओ हैड डिसाइडेड कि भाई हम बंदवाड़ी का जो कचरा है उसको उसका सुलझेड़ा हम दिसंबर तक कर देंगे। तो मैंने कहा सबर करो दिसंबर तक। नहीं हुआ तो और गवर्नमेंट बीजेपी की हुई तो बैठेंगे, तो आप अपने गवर्नमेंट के खिलाफ बैठे। जो भी गवर्नमेंट होगी उसके खिलाफ बैठेंगे। मेरा तो ये था कि जो भी मैंने जो कह दिया है उसके ऊपर तो अमल तो करता हूँ ना, अपनी तरफ से कोशिश करता ही। तो अब उन्होंने हमको टाइम मांगा है दिसंबर तक, 6 महीने का, तो दिसंबर भी आ जाएगा। तो हम ये बात जो कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट की, पिछले 10 साल में बहुत बार ऐसा हुआ है, आपने मंच पे अपने ही मुख्यमंत्री को याद कराया है कि जी ये प्रोजेक्ट रह गया, ये बात भी कर दीजिए खट्टर साहब को। हमें पूरे 10 साल वो वीडियोस तो बहुत ज्यादा चले। वो तो मेरा हक है ना, चाहे मेरी सरकार हो या किसी और की सरकार हो, बतौर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल मैं अपना हक तो मांग ही सकता हूँ ना। तो मैं तो सिर्फ अपना हक मांग रहा था, जो जनता की आवाज है उसको मैं उठा रहा था, तो वो मेरा फर्स्ट था। आई डोंट थिंक देयर इज एनी एंटी पार्टी एक्टिविटी। It's just healthy. It's a healthy democratic tradition that you must say what you require and what you think is not right. You must express it. अगर बताओगे नहीं, माँ भी तो उसी को दूध पिलाती है जो बच्चा रोता है। लोग कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी के लिए कांग्रेस से ज्यादा ये बारिशें उनके ऑपोजिशन में, जब वादा करती है बीजेपी तब बारिश हो जाती है और सारी पोल खुल जाती है। ये तो देखो जो एंटी इनकम्बेंसी की बात है ना,
ये तो कोई किसी की भी सरकार हो, जब कांग्रेस की सरकार थी एंटी इनकम्बेंसी उनके साथ थी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो एंटी इनकम्बेंसी हमारे साथ है। पर ये भी लोगों को पता है आज के दिन कि भारतीय जनता पार्टी में जहां तक नौकरियां दी हैं किसी एक क्षेत्र के लोगों को नहीं दी है, बराबर के तौर के ऊपर, काबिलियत के तौर के ऊपर बांटी गई। जो डेवलपमेंट हुई है सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं हुई है, जैसे करनाल के अंदर केवल डेवलपमेंट नहीं हुई है, बाकी हरियाणा की सभी जिलों के अंदर चाहे पर्याप्त हुई हो वो डिबेटेबल है, लेकिन प्रयास ये रहा है कि हर एक कौम को, हर एक वर्ग को, हर एक क्षेत्र को बराबर के तौर के ऊपर रखा जाए। तो उस तौर के ऊपर मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया। एंटी इनकम्बेंसी लोकसभा में भी फैक्टर था, क्योंकि जब आप लोकसभा में खड़े थे सारे ही बड़े नेता एक मंच पे आए थे, सीएम खट्टर आए थे, उस टाइम पे वो फॉर्मर सीएम हो गए थे, वो आए थे और उन्होंने कहा था कि आपकी जीत बीजेपी की सबसे बड़ी जीत होगी स्टेट में, 8 लाख का उन्होंने फिगर दिया। बट वो सिर्फ 75,000 की हुई और एंटी इनकम्बेंसी को माना गया कि लोग नाराज थे। इनफैक्ट आपने भी काफी ज्यादा यू स्पोकन फ्रॉम अ लॉट ऑफ पब्लिक पोर्टल्स अबाउट दिस कि यू वर द एमपी एंड वो आपका वो ही नहीं था, आप नहीं कर सकते थे उसको ठीक, लेकिन लोगों में वो गुस्सा था। तो आपको लगता है एंटी इनकम्बेंसी ने आपकी परफॉर्मेंस पे भी इम्पैक्ट किया? जो मेरी तो क्या मतलब पार्टी की सभी एमपी के ऊपर इसका दुष्ट असर पड़ा है, हमारी आधी रहेगी ना। आपको तो स्टार बना के उन्होंने कहा था सबसे ज्यादा आपका मार्जिन होगा, what a poster boy. We must also, when they say that, in the areas where the BJP gets votes, I still made good. Gurgaon के अंदर I won over a lakh, Bachapur I won over a lakh, Patodi I won by 50,000. 50,000. You know, only in Sona I won only by 6,000. But they don't factor in the fact that there are other parts of my constituency, which is Mewar, and which is the Muslim dominated area, 50% of Sona, which is Muslim dominated area. These 5 lakh Muslim votes and bloc went against. Talking of the Mewar and it is simmering with a strong anti-BJP sentiment. Mewar has not forgiven BJP for rights and the bulldozer action. वो कहते हैं उसके बारे में, you as an MP have stood with them at that time also. I think you were the only one who said कि गुड़गांव की इमेज नहीं खराब होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स पे इम्पैक्ट होगा। मेवात आज बहुत ज्यादा एंटी बीजेपी उसमें सिमरिंग है। इनफैक्ट बीजेपी को लोग नहीं मिल रहे थे टिकट देने के लिए मेवात। Nobody wanted to go for that. ऐसा नहीं है, मतलब बीजेपी एक सीट पे 2-3 मतलब लोग टिकट तो मांग ही रहे थे। और नाराजगी तो मुसलमानों में है। पर नाराजगी मुसलमानों के अंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारे को इन 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करना बड़ा कठिन सवाल है। क्योंकि 100 साल में जहाँ कभी इतने बुरे दंगे नहीं हुए, वहाँ दंगे आपको लगता है कि could have been handled better अगर कम्युनल टेंशन हो भी गया? I think everything in hindsight, could have been done better. But at that time we did what we could do, and we have stationed now paramilitary CISF cantonment kind of a thing, which is called Indri. Yeah. So if there is a Hindu-Muslim kind of riot again, we have police forces right there next to the station. So I think we need to keep this balance between the Hindus and the Muslims in Iraq at an even keel. और जब से ये स्थापित हुआ है तो कम से कम दंगों की जो आशाएं या शंकाएं हैं वो थोड़ी कम होगी। मतलब मेवात दोबारा कभी अब मेरे को नहीं लगता क्योंकि वो बिल्कुल वोटों में तो शायद वो हमारे साथ ना रहे। मेवात एज अ रीजन कभी दोबारा इससे तो नहीं गुजरेगा जो जिस चीज से नहीं, तो उम्मीद तो हमारी यही है कि इस तरह की हरकत दोबारा से मेवात के अंदर नहीं होगी, और होगी भी अगर तो पर्याप्त मात्रा के अंदर वहाँ सैनिक बल मौजूद हैं करना। इलेक्शंस पे वापस आते हैं। द बीजेपी कांग्रेस हैज केप्ट इट्स कार्ड्स वेरी क्लोज, नो सीएम फेस, नो सीएम कैंडिडेट एज हाउ डू यू थिंक, मतलब what kind of political move is this that BJP right after the Lok Sabha elections said कि Nayab Saini is going to be the CM face, the CM face, the CM face. Yesterday, Anil Vij, one of the popular leaders, one of the ignored leaders, he said he is the senior most amongst the MLAs and he's in the race for the CM.
So what do you think? Has party, been clear about that CM phase thing is going to help it, or politically it can somewhere be a dampener for the people? See, what I perceive, and maybe I'm wrong, the party has said that Naib Singh Saini will lead the BJP charge in the elections. In the elections. It does not necessarily mean that he will be the chief minister. Or CM phase. Or this, no, he will, once the party comes into power, then it's for the party to decide who will be the CM phase. But right now, to head the campaign, it is Naib Singh Saini. This is what I think. Some people might think that this also means that CM Naib Singh Saini will be CM after the elections are over and the BJP comes to power. But there is this bit of a dichotomy which can be sort of interpreted either this way or that way. And so when Anil says that he's the senior most, he also has a right, he's the senior most members of the BJP. And that opens way for almost everybody. Anybody can be CM, but if Mr. Manohar can become chief minister when he wasn't over there before the BJP in the run-up to the election, anybody can, especially somebody who's been working. So even Rao Inderjit can. Anybody can. Anybody can. That's what the BJP thrives on. Yeah. Anybody can become the chief minister. Even the lowest of low worker of the party can become the chief minister. So everybody has a right. So BJP has itself opened the doors for ambitions to rise. But you have always been ambitious, as everybody knows. From that outsider import leader, one of the strongest pillars. Let's talk about that video which went viral. That was your OBC Samman Sammelan. It was the Home Minister Amit Shah. He nudged our CM to make way for Rao Inderjit Singh to stand next to him, and that was taken symbolically. This is the start of new era. Ahirwal is getting important. No, nothing like that. Naib Singh Saini is a 6'2" fellow. I'm 5 feet 8 inches. So I was in shadow, so he just brought me forward. Basically, Rao Inderjit Singh is being brought forward from the shadows. Whatever it is, but it can be interpreted also that, I mean, I should not, this is my area. Chandigarh is an area where I've never, when I was the MP, ever lost an election. So you wanted to give local leaders a preference. So I think that's why. Your daughter Arti is also, debuting now. She is really taking big backs. Do you think Arti has paid a price for being your daughter? I think so. First and foremost, when the Prime Minister said Parivar Raj, so people misinterpreted it to mean something totally different. And he clarified later in Parliament, this last budget session, that when he says Parivar Raj, it means those people who have a party of their own and are running it as a personal fiefdom. It does not mean somebody who's worked for the party and whose children have worked for the party, that the children should be denied a ticket. So, I mean, he differentiated between that. Arti, do you think, because no offense, somebody is saying Nepo princess, somebody is saying Papa ki pari, other people are saying Arti अटेली में रुकेगी ही नहीं, तो आपको लगता है कि आपको लेकर जो लोगों का वो है उसका आरती के डेब्यू पे फर्क पड़ा है? उसमें फर्क डालने की कोशिश कर रहे हैं। सारे गैंग अप हो रहे हैं, चाहे वो हमारी ऑपोजिशन हो, कई बार हम महसूस करते हैं कि शायद हमारी पार्टी के ही नेता क्यों ना हो, वो सारे गैंग अप कर रहे हैं कि ये मशाल नई पीढ़ी के ऊपर ना चले। उसके लिए वो पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। We expected that also. But Arti has not only been a non-successful aspirant for the ticket, she has been denied a ticket, and even thereafter she has had party MLAs. So she's earned her place. She's earned her wings. She's earned her spurs, as they say. Yes. She's earned her spurs. And when those people in Ateli say that she's Raja ki beti, but that's not about anyone. So those people who say Raja ki beti hai, they've never met her before. This is the first time she's forayed into electoral politics in Ateli. So ask people who are
known to her or who she is known to. Say, ask people of Rewari, ask people of Pataudi. Let's sign off with why should people trust BJP again from the man himself, Rao Inderjit Singh. Well, I don't know if they will trust Rao Inderjit Singh's word or not, but one is trying to say that we will try to usher in a better regime for you after 10 years of failures and successes. We've learned a lot, and if they were to... Party has learned the lesson. Party has also learned a lot. Party has learned, there is no doubt about it. The party has learned a lot, and because of that, I say with some level of confidence, that maybe we've learned from our mistake and the people give us another third chance that we do better than we did in the last 10 years. So that was Rao Inderjit Singh for you, the man of the hour who promises that BJP will do better this time.